Uh, Dear student, good afternoon. Today we will discuss on the topic of half-life period of a reaction. Uh, when a reaction become half from its initial concentration, it is called half-life period of a reaction. It is not denoted by T half. Another time, when a reaction become half from its initial concentration, it is called half-life period of a reaction. It is denoted by T half. कि जब कोई रिएक्शन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए उसे हम उसका क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं. सपोज हमारे पास we have a first order reaction, we have a first order reaction. What is the first order reaction? We know that Kt is equal to log E base A0 upon AT. We have covered it in my first lecture, this reaction. It is the integrated rate of reaction for first order reaction. When we can write from this, we can write its reaction like this: ln A0 upon AT. दिस इज द अनदर वे. लॉग ई बेस को हम ln भी लिख सकते हैं. व्हेन वी कन्वर्ट ln और log ई बेस इनटू log 10 बेस, देन वी कैन राइट Kt इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस A0 upon AT. And we can write this reaction like this: T is equal to 2.303 divided by K log 10 base A0 upon AT. When T is equal to T half means रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हो गया. एंड इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? AT इज इक्वल टू A0 बाई 2. इस इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी? AT. तो A0 जब उसके डिवाइड अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, इट विल बिकम द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन. पुट दिस वैल्यू इन दिस रिएक्शन. T इज इक्वल टू T हाफ मीन्स T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10 बेस A0 जो कहते हैं एंड डिवाइडेड बाई A0 बाई 2. देन इट go from this side and A0 cancel by A0. Then T half is equal to 2.303 divided by K log 10 base 2. log 2 की वैल्यू क्या होती है? We know that the value of log 2 is equal to 3.303. Then T half is equal to 2.303 divided by K into value of log 2 is 0.3010. Then we can get T half is equal to
multiply 2.303 into 0.3010, it will come 0.693 divided by k. It is the half-life period of first order reaction. It is the half-life period of first order reaction. T half is equal to 0.693 divided by k. Thank you so much, students.